Hello, students. Welcome back with our new chapter, that is the poverty as a challenge, from your books Economics, in which we cover the following topic, that is the first of all introduction about the poverty. After then we will understand what is the main meaning of the poverty, what is the criteria of the poverty, and after then the poverty line which differentiate between the poor and the non-poor, types of the poverty, and after then the extent of the poverty and the causes of the poverty and the different scenario in the world scenario, and the interstate disparities are there. Suggestion to remove poverty, and at the last the measurement adopted by the government to remove the poverty. Let's start our chapters. First of all, economical growth is the meaningless as a sizable segment of the society suffers the poverty. Okay, growth is convenient into the develop only when the poverty is eliminated, implying that the people no longer suffer hunger, dread, starvations. They had at least the bare the minimum basic needs, that are food, clothes, housing, education and the health facility. मीन्स अगर कोई भी देश डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलप हो रहा है, अगर वो डेवलपमेंट विदाउट रिमूविंग द पॉवर्टी है, देन इट इज़ नॉट एक्चुअल डेवलपमेंट. If any person did not fill the basic needs like the food, cloth, education and the health facilities are there, okay, अगर इन सब को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में, then that is not a actual mean of a development. Despite a significant growth in the GDP, poverty continues to be a major challenge in India. Definitely the GDP is increasing, goods and services increasing in the economy, but due to this poverty, the increasing rate of GDP is quite slower. The present chapters or the presentations analyzes the concept of the poverty along with the two variations, that is the absolute and the relative poverty, which we discussed the latest. And after then we will say the trends of the poverty in our country. First of all, we will understood what is the meaning of the poverty. Different economists have given the different definition of the poverty. Some define poverty in terms of the income, but the some likely to be fluctuate more than the consumption. यानी कि जब हम poverty को calculate करते हैं, there is a two criteria. The first is the income and the another is the consumption pattern, जिसको हम calorie basis भी कहते हैं. यानी कि हमारे पास दो criteria to differentiate the poor on the non-poor. The first criteria income criteria and second is the consumption criteria, जिसको हम calorie basis भी कहते हैं. Consumption is maintained through the saving and this savings. This is why the large number of the country's poverty has been defined in the context of the per capita intake or the calories, means that is the consumption and the minimum level of the consumption. ये देख ले बहुत सारे countries इस minimum level consumption या calorie basis या consumption basis को criteria मानते हैं to calculate the poverty. The term poverty thus may be defined as a phenomena where the society is unable to fulfill the basic needs, and there is a basic needs are the food, cloth, shelter, education and the health. There's a 5 basic needs. Okay, if any person did not fulfill these 5 basic needs is known as the poor. Is that clear? So to differentiate between the poor and the non-poor, we will use the one criteria, that is the poverty line. Above this poverty line, the person who are above the poverty line is known as the APL, that is the above poverty line, and the person who is poor or below the poverty line is known as the BPL, that is the below poverty line. BPL को ही हम यहाँ पे poor कहते हैं. The Asian Development Bank estimated the India population to be at the 1.28 billion with an average growth rate of the 1.3% from 2010 to 15. In 2014, 49.9% of population aged between the 15 and the above, okay, from 15 to 59. Is it clear? However, 21.9% population still living the below of the poverty line. यानी कि अगर हम आज के डेट में बात करें, आज के डेट में भी हमारे देश के लगभग 21.9% population BPL है, यानी कि पुअर है. The current official measures of the poverty are based on the Tendulkar Commissions or the Tendulkar Poverty Line estimation, fixed by the daily expenditure of the rupees 27.2 rupees per day in the rural area and the rupees 33.3 in the urban area is a criteria to main being the too low at that time. देख लें, यानी कि आज के डेट में हम जो पावर्टी का एस्टिमेशन करते हैं,
तेंदुलकर कमीशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने के लिए आज़ादी के बाद से और पहले भी बहुत सारे कमीशन स्टैब्लिश किए जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। बट उनमें जो सबसे मोस्ट फेमस रिपोर्ट है दैट इज द गिवन बाय द मिस्टर तेंदुलकर। ओके, द करंट पॉवर्टी लाइन्स इज द $14 per month or 0.46 per dollar in a day in rural area. In urban area it is 17 per month or 0.56 per day in the urban area. Is national average poverty lines different from each state and the poverty line? जब हम पॉवर्टी लाइन के क्राइटेरिया की बातों में बात करते हैं, देर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन पॉवर्टी। जब हम इनकम के क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, अर्बन एरिया में रुपीज़ का क्राइटेरिया ज़्यादा रहता है जबकि रूरल एरिया में क्राइटेरिया कम रहता है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि अर्बन एरिया में एक्सपेंडिचर करने के लिए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जबकि जो कैलोरीज का बेसिस है यानी कि यूनिट कंजम्पशन का बेसिस है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है जबकि अर्बन एरिया में कम है। रूरल एरिया में कंजम्पशन का परसेंटेज ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे मैक्सिमम काम फिजिकल वर्क होते हैं, बिकॉज इन रूरल एरिया द मेन ऑक्यूपेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई द कंजम्पशन इज और द कैलोरी बेसिस इज मोर in rural area and less in urban area. Is it clear? So that is the different commissions report as given. That is not in syllabus, but for the knowledge you have to know about this thing, that the Lakkarwal committee is established and the Tendulkar commissions is there and the Rangarajan committees are there. ये different persons हैं जिनके अंडर में लकड़वाल, तेंदुलकर, रंगराजन are the different person जिन्होंने उस समय पे उस commissions को लीड किया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने different एस्टिमेशन किया था पॉवर्टी का। लकड़वाल कमेटी के अंतर्गत 2005 में दो टोटल पॉवर्टी का रेशियो था हमारे देश में डेट 27.5%, जबकि तेंदुलकर कमीशन ने वही परसेंटेज 37.2 बताया था। लेकिन 2011-12 में तेंदुलकर कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश का जो पॉवर्टी क्राइटेरिया है दैट इज परसेंटेज है दैट इज 21.9%, जबकि रंगराजन कमेटी ने जो परसेंटेज बताया था दैट इज 29.5%। और ओवरऑल जो एक्सेप्टेंस की जाती है पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए वी फॉलो द तेंदुलकर कमीशन रिपोर्ट। So, poverty line is a cut of the line of distribution which is usually divided the population of a country into the poor and the non-poor peoples. जब हम डिटरमाइन करते हैं पॉवर्टी लाइन को इन इंडिया मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और MPCE मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, यानी कि पर मंथ में कितना कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज द MPCE। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्लानिंग कमीशन हैज डिफाइंड पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच मीट द एवरेज पर कैपिटल डेली इक्विवेलेंट, जिसको हम कैलोरी बेसिस करें। और आज के डेट में जो कैलोरी बेसिस है दैट इज द 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरिया। इन अर्बन एरिया इट इज द 2100 कैलोरीज रेशो विच इज नोन एज अ मिनिमम फूड एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर गांव में कोई व्यक्ति है अगर वो पर डे 2400 कैलोरी का कंजम्पशन करते हैं तो ही इज़ नॉट पुअर। इन अर्बन एरिया में अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरीज का कंजम्पशन करता है इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए पुअर, यानी कि एक्सपेंडिचर बेसिस में कैलोरीज बेसिस में आज की डेट में हमारा क्राइटेरिया ये है। According to the Planning Commission or the Tendulkar methodology or the Tendulkar Commission's report, the minimum monthly per capital consumption expenditure is 2011-12 is the rupees 816 per person in the rural area. In urban area that is the 1000 rupees per person. Is that clear? So that is the rupees basis according to the Planning Commission or the Tendulkar Commission. And also the World Bank have given the definition for the estimate the international poverty ratio. World Bank defines the poverty line as a $1.90 per capital per day। ये देख लें, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पर डे में इतने डॉलर एक्सपेंडिचर नहीं करा ही इज कंसिडर्ड एज ए पुअर, जो आज के डेट में क्राइटेरिया है। दोस आर लिविंग ऑन द लेस देन $1.90 पर डे आर द पुअर। Okay, according to this definition 21.9% population of India in 2011 was considered as a BPL or the below poverty line. 216 million persons were living less than 1.90 per day, यानी कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का जो है 268 मिलियन पर्सन आज की डेट में भी BPL की कैटेगरी में यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है। ये देख लें। अब हम अपने देश में बात करें, देयर इज अ टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी, देयर इज अ वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अदर इज रिलेटिव पॉवर्टी। When the level of the income of a country is so low that they cannot be meet even the minimum consumption requirement of the food, clothes, shelter, education and health, that will be absolute poverty। यानी कि जो poverty की definition है that is the absolute poverty if the person did not fulfill the basic needs of the food, clothes, education, health and the shelter, then he considered as a
poor. The person whose income is low and they are unable to purchase the food that can be provided than the minimum requirement calories per day are treated as a absolutely poor. Okay, absolutely poverty in India can be seen among the millions of the semi-starved, undernourished, shelterless people suffering from ill health and the disease who are not access the medical and the health facility. इसके अलावा जो पॉवर्टी रेशियो उसके साथ एक ड्रॉबैक है कि पॉवर्टी के साथ साथ वो और दूसरी चीज़ों को भी सफरिंग में होते हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ and malnutrition and the other forms of diseases. They did not access the basic medical or the health facilities also, and this is the calculated the poverty calculation was done by in India by the National Sample Survey Office or the NSO in 2011-12. That is the ratio is the 21.9%. is clear? ये जो poverty का estimation है हमारे देश में NSSO करता है, that is the National Sample Survey Office. अब जब रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं, व्हेन वी कंपेयर द इनकम ऑफ ए डिफरेंट पीपल एंड वी फाइंड दैट सम पीपल आर द पुअर देन द अदर, it is called the relative poverty. It means when we compare the two person, then definitely one will be the poor. is it clear? So जो poor है उसको हम relative poverty कहते हैं. Thus some peoples of the group of the people and the religion and the national that have the lower income than the other group is person is known as the relative poverty. Thus relative poverty refers to the poverty of the people in comparison to the other people, other regions or the other nations. Is it clear? So problem of the relative poverty is to estimate the problems of the inequalities of the income and the assets of the ownerships. यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी में यूएसए और इंडिया को जब हम कंपेयर करते हैं, इंडिया इज़ पुअर, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान इज़ पुअर, यानी कि दो हम कंट्रीज, दो व्यक्ति या दो किसी प्लेस को या रीजन को कंपेयर करते हैं, डेफिनेटली एक पुअर होगा और इसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. इसके अलावा दैट इज अ क्रॉनिकल पॉवर्टी, दोज हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर, यानी कि जो पहले भी पुअर थे अब भी हैं और फ्यूचर में भी पुअर हैं, जैसे कि लैंडलेस वर्कर्स, यानी कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो खेती काम करेंगे और कोई अर्निंग करेंगे, और डेफिनेटली जब उनके पास आज की डेट में अर्निंग शॉर्ट है, डेफिनेटली वो किसी भी तरह की और यानी कि लैंड परचेज नहीं कर सकते, ना अपनी खेती कर सकते, डेफिनेटली दे विल बी पुअर ऑल द टाइम्स. इसके अलावा कैजुअल वर्कर्स. इसके अलावा ट्रांजिट पुअर दोस हु आर द मूविंग इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी. ओके, यानी कि जो पॉवर्टी में आते जाते रहते हैं, यानी कि जो जो स्विच ओवर करते हैं एपीएल और बीपीएल के बीच में रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, जैसे कि सीजनल वर्कर्स हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सीजनल वर्क, जब काम होता है लोगों को इनकम जनरेट होती है एंड दे विल बी एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते, लेकिन जब काम नहीं होता उनको इनकम के कोई सोर्स नहीं होते एंड दे आर द पुअर. तो जो पॉवर्टी में आते जाते रहते हैं दैट इज नोन एज द ट्रांजिट पुअर. Now, the extent of the poverty in our country, the estimation of poverty are given in the two form, that the poverty ratio in percentage and the poverty numbers. Okay, we can say the total number of the poor. When the number of the poor people is estimated as a proportion of the poor below the poverty line, जब हम proportion percentage की बात करते हैं उसको कहा जाता है head count ratio. And when the count is in the number, जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं दैट इज द हेड काउंट रेशियो, और जब हम नंबर में कैलकुलेट करते हैं दैट इज द हेड काउंट. इज इट क्लियर? सो द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर मेड एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल बाय द प्लानिंग कमीशन, यानी कि पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है हमारे देश में नेशनल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल में भी किया जाता है बाय द एनएसएसओ. In 1973-74, more than the 320 million people were below poverty line. In 2011, the number was come down to be 270 millions, यानी कि 73-74 में जहाँ 320 millions थे, 11-12 में उनकी संख्या घट के 270 million हो गई. इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं 73-74 में दैट इज द परसेंटेज इज द 47%, जबकि 11-12 में बात करें दैट इज द 21.9%, यानी कि द गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव टू रिमूव द पॉवर्टी, दैट द इफेक्ट विल बी शोइंग हियर. अब जब स्टेट वाइज बात करते हैं, द स्टेट वाइज देयर इज अ लॉट्स ऑफ द इंटरस्टेट डिस्पैरिटी बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर स्टेट्स. पॉवर्टी रेशियो इन द फोर स्टेट बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वॉज अबव द नेशनल एवरेज, यानी कि 21.9% पॉवर्टी से भी ज़्यादा पॉवर्टी इन चार राज्यों में है. दिस फोर्स अकाउंट फॉर द नियरली हाफ ऑफ द पुअर ऑफ द कंट्री इन 2011, यानी कि हमारे देश में जो टोटल पॉवर्टी परसेंटेज 270 मिलियन पीपल्स हैं उनमें से 50% पीपल अकेले इन्हीं चार राज्यों में मिलते हैं जो बीपीएल हैं. देखिए दैट इज द वन शेड्यूल विच इज गिवन नंबर्स ऑफ द पुअर्स एंड द परसेंटेज इन द डिफरेंट ईयर. 1966 में परसेंटेज 34%, उसी तरह से धीरे धीरे हम पॉवर्टी का परसेंटेज देखते रहते हैं, एंड इन 2011 दैट इज द 21.9% एंड द नंबर ऑफ द पुअर
दैट इज द वन टेबल्स प्रेजेंटेशंस आर देयर जिसमें हर ईयर में पुअर और पुअर पॉवर्टी का परसेंटेज दिया गया है, देख लो. सो कीप इन योर माइंड दैट इज द रेशियोज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ let's see the what kind of a scenarios in the global poverty trend. The proportion of the people living under the poverty in the different countries is different by the international poverty limit. Earlier it is a $1 per day, but at the current it is a $1.90 per day. In the Southeast Asia and the China, there is a decline in the poverty due to the rapid economical growth and the massive investment in the human resource development. यानी कि ईस्ट ईस्ट कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, चाइना की बात करें, उन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस कर दिया क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. ये देख लें, जब एजुकेशन पे, जब हेल्थ में, जब ट्रेनिंग में खर्चा किया जाता है, देन द पर्सन बिकम द रिसोर्स एंड ही विल जनरेट द सम काइंड ऑफ इनकम, और वो पॉवर्टी से ऊपर आ जाता है. In China, the number of the poor has come down from 85% in 1981 and the 14% in 2000, and now in 2007 is 6. यानी कि जहाँ पे 81 में चाइना में पॉवर्टी का परसेंटेज 85 था, वहीं पे 2011 में ये सिर्फ 6% रह गया. ये देख लें. बट दिस डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन सो रैपिड इन द साउथ ईस्ट एशिया लाइक द इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. ठीक है, बाकी देशों में हमें ऐसे पॉवर्टी का ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है. नाउ कम टू द लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियंस. पॉवर्टी रेशियो हैज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली सिंस 1981. it is 11% and now it is in 2008 it is near about the 6.4%. In sub-Sahara Africa, poverty has increased since 1981 due to the successive drought and the other reasons. However, it declines from 51% to the 47% 2000. सहारा अफ्रीकन कंट्री के बारे में बात करें जहाँ पे रिसोर्स नहीं है, बहुत तरह के और प्रॉब्लम्स हैं, ड्राउट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी कम तो ही लेकिन इतनी भी, लेकिन फिर भी आज की डेट में उनके पॉवर्टी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. इट सीम्स दैट पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो research in the some of the former socialist countries like the Russia where the official it was not existent earlier. Now come to the topic, what is the characteristic of the poor people. Poor people suffer from the hunger and the malnutrition. About the 15.2% of the world total population undernourished people lives in India. ये देख लें, यानी कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, हंगर की बात करें, malnutrition की, दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पोअर पीपल. पोअर पीपल पोजेस आइदर नो इनकम और नो एसेट्स. ये देख ले, या तो उनके पास किसी भी तरह की इनकम नहीं होती या उनके पास किसी भी तरह के एसेट्स जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं होती है. पुअर पीपल आर फिजिकली वीक ड्यू टू द इल हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड सीरियस इलनेस. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम्स. क्योंकि ज़्यादातर रीज़न यही है कि जितने भी बीमार व्यक्ति हैं जो काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली दे आर द पुअर. पुअर पीपल सफर फ्रॉम द लैक ऑफ द लिटरेसी एंड द स्किल्स. उनमें किसी भी तरह की लिटरेसी यानी कि एजुकेशन का परसेंटेज कम होता है और किसी भी तरह की फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग या स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है. क्योंकि अगर उनके पास एजुकेशन होती, लिटरेसी होती, किसी तरह का कोई स्किल्स होता, डेफिनेटली दे विल नॉट बी पुअर. अगर किसी भी व्यक्ति में कोई टैलेंट है, किसी काम को करना जानता है, तो ही विल नॉट बी ए पुअर. They also do not have the access of a basic amenity like the safe drinking water or electricity. यानी क्योंकि उनकी सराउंडिंग ऐसी थी कि they cannot afford this kind of a things. ये देख लें, poor people have the large side family basically due to the illiteracy. The family size is big. Poor people are forced to borrow from the money lenders due to fulfill their basic needs or some other expenditure at the high rate of interest which fall into the debt trap, जिसकी वजह से वो कर्ज में फंस जाते हैं and they will also committed the suicide. Now, causes of the poverty. Let's see what is the main cause of the poverty in India. First of all, low level of the national product. In India, the miserably low compared to the size of the population. क्योंकि हमारी population जिस तरीके से बढ़ रही उस तरह से goods and services नहीं बढ़ रही. That is a low per capita income the obviously consequence. यानी कि हम जब बात करें पॉपुलेशन की स्पीड तेज़ी से है जबकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस होने की स्पीड कम है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशंस है गुड्स एंड सर्विसेज का दैट इज द अनइक्वल. वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास मिलता होता है जिनके पास इनकम ज़्यादा है. इसके अलावा लो रेट ऑफ द ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है इन द 5 years प्लान दैट इज जस्ट ए 5%. इसके अलावा वन ऑफ द मेन कॉजेज दैट इज द मेन एलिमेंट टू of poverty, that is the heavy pressures of the population or the increasing trend of the population. The population was increased due to the low birth rate, low death rate, high birth rate and migrations. With this, the continuous increase in the population and the pressures of the dependent populations was increase in the working capitals. यानी कि उन लोगों पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता who is working and who is a working population
डिपेंडेंट होने के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण डिपेंडेंसी का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन स्पाइरल, इन्फ्लेशन को आप समझ सकते हैं महंगाई। इट मीन्स ए सिचुएशन ऑफ प्रेजेंस राइज इन द प्राइस, इन्फ्लेशन कंपाउंड द पॉवर्टी, यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज कम पैदा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है डेफिनेटली द प्राइस विल कंटिन्यूसली इंक्रीज। दैट इज द मेन कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, द पर्सन डिड नॉट फुलफिल द बेसिक नीड्स। ये देखते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिकल एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर चुके थे, जो शुरू से ही पुअर है, कोई इस तरह का स्किल नहीं, जो आज के डेट में पुअर है, जस्ट लाइक ए नेट स्किल। इसके अलावा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स द पर्सन इज नॉट यूजिंग हिज फुल पोटेंशियल, लाइक वन बी टेक एम टेक इंजीनियर स्टूडेंट्स इज वर्किंग एज ए मशीन ऑपरेटर, यानी कि उसके पोटेंशियल, उसका कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा दैट द कैपिटल डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ड्राइव्स ऑफ द इकोनॉमिकल ग्रोथ। एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल पॉइंट ऑफ राइस इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा कैपिटल होते हैं, जितना ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, उतना ज़्यादा वहाँ पे उनका प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का हो सकता है। बट unfortunately the capital stock and the capital formation means the investment is very low in our country। ये देख लें। इसके अलावा हम बात करें the social cost is also there, that is the caste system, joint family system, some religious expenditure and the some others kind of a things in which we expend lots of the money। ओके बहुत सारा पैसा हम मैरिज में, फेस्टिवल्स में और बाकी ऐसे कामों में करते हैं विच इज़ अ वेरी अनप्रोडक्टिव, इसलिए भी हमारे देश में पॉवर्टी का परसेंटेज ज़्यादा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दैट इज द इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी हमारे यहाँ पे लैक है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ एंड द हाउसिंग फैसिलिटी विच इज़ नोन एज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज नॉट इन द रीच ऑफ ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? सो others, one of the most important, that is the political cause. Political structure in the economy is also regarded as one of the major causes to responsible to increase the poverty in the country. All the economical policies are formulated to promote the interests of the richer section, or we can say the industrial policies are there। ओके जितनी भी पॉलिसी वो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, वो लैंड लॉर्ड से रिलेटेड है, ना कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनती जो पुअर से रिलेटेड है या रिमूव पॉवर्टी से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द मेजर ड्रॉबैक और द कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी इन आवर कंट्री। नाउ some suggestions are to remove the poverty. The first of all we have to develop the agriculture sectors, because Indian economy is based on the agriculture sector and the agriculture is the backbone of the industry। ये देख लें, अगर आज के डेट में हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है एंड secondary sector and the tertiary sector is dependent on this agriculture sector। इसके अलावा we have to reduce the inequality with the taxation policy and the subsidy। ये क्लियर? यानी कि जितनी की इनकम ज़्यादा है उन पर टैक्स इम्पोज करके एंड द सब्सिडी वॉज गिवन टू द पोअर सेक्शन, ताकि हम उनके रिच और पुअर के बीच का गैप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव टू चेक द प्राइस पैटर्न, मीन्स महंगाई, इन्फ्लेशन। ओके कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस, स्पेशली द फूड आइटम, जितने भी नेसेसिटी आइटम्स हैं, गुड्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, द प्राइस मस्ट बी कंट्रोल है, उनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाना चाहिए कि दैट इज विल बी रीच इन ऑल द पोअर पीपल्स। ठीक है, generation of employment opportunities, so we have to initiate that kind of a plans which increase the employment opportunity to all the peoples within a country, basically to generate the employment opportunity। इसके अलावा we have to control the main population of the country which is the main causes of the poverty। okay अगर population भी तेजी से बढ़ते रही तो definitely हम जितना भी development कर लें, जितना भी growth कर लें, we cannot reduce the poverty। so first of all we have to introduce the important of the family planning within the country to each and every peoples। okay इसके अलावा we have to special focus on the backward research, like where the lots of the peoples are the poor in the this state, that is Odisha, Nagaland, Uttar Pradesh and Bihar। we have to special focus on this pair where the nearly half of the peoples were below poverty line is living in these states। ओके तो हमें ऐसे प्लान बनाना चाहिए कि बैकवर्ड रीजन को सबसे पहले डेवलप किया जाए। इसके अलावा वी हैव टू डेवलप ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हम इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वी हैव टू एक्सपेंडिचर इन दिस गुड्स एंड सर्विसेज और इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप द कंट्री और टू डेवलप द पुअर। नाउ
Converting poverty through the GDP growth. GDP growth is an ultimate solution to problem the poverty. When the pace of the GDP growth accelerate, जब GDP बढ़ेगी, गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली द एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ज़्यादा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनके पास इनकम बढ़ेगी. इसके लिए वी हैव टू मेजर सम फिजिकल मेजर्स. फिजिकल मेजर मीन्स टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी होती है जिसमें टैक्स और सब्सिडी आते हैं. मीन्स कि रिचर सेक्शन पे हम हैवी टैक्स इम्पोज करें और गरीबों को वी हैव टू प्रोवाइड द सब्सिडीज. सब्सिडीज मीन्स कि राशन सस्ता दें, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको सस्ते में ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें. दैट द फिजिकल पॉलिसी. इसके अलावा एट द लास्ट दैट द लेजिस्लेटिव मीन्स कि कुछ हम ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाएं जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस की. ओके, लाइक द मिनिमम वेज एक्ट, यानी कि काम के बदले कम से कम इतनी वेतन तो मिलना ही चाहिए, इससे कम नहीं. ओके, ताकि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. इसके अलावा सम अदर दैट इज द प्राइस फ्लोर, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जितने भी फार्मर्स हैं जो कुछ भी प्रोडक्शन करें उनके लिए कम से कम इतने प्राइस मिल रहे हैं. इसके अलावा कई और एक्ट्स कानून हम बना सकते हैं. दैट इज द राइट टू बी एजुकेशन, कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि हम कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाएं ताकि पोरों का डेवलपमेंट हो सके. नाउ the some measures which is adopted by the government which is known as the PAPS, जिसको हम poverty alleviation program बनाते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें which the method which is utilized in the under the 5 years plans. First is the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes, or the that is the which is programs which is launched by the government, which is started in the year 2nd 5 2006, in which the lots of the program was implemented and is started in the 200 district. Under these programs, the 100 days of employment was provided to all the person or the rural area, and now it is has been raised to the 150 days employment in a year to poor people. Is it clear? Second, Deen Dayal Upadhyay Yojana, that is the National Rural Livelihood Missions, and the lots of the missions are merged in these programs. In this, we have to give the employment of the household to support that they became the objective of poverty. यानी कि इस प्रोग्राम में जितने भी पॉवर्टी से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं. ये देख क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज द स्वर्ण ज्योति ग्रामीण स्वरोजगार योजना SGSY, which is started in the rural area in the April 99. Lots of the program IRDP and the TRISOM was submerged in these programs. Okay, under this program a large number of small entrepreneurs and established in the rural area. So it is to promote the small entrepreneurs or the business or the industries in the rural area to develop this condition. इसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर सकते हैं और कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो रूरल एरिया में हम स्मॉल स्केल लेवल में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं. फोर्थ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन विच इज़ नोन एज द NRLM, जिसको हम कह सकते हैं आजीविका. आजीविका में to earn some kind of income, which is started in the 150 district. After then it will be expanded to more than the 150 district, and this program is targeted to the self employment in the rural area. Okay, next is the Sampurna Gramin Rozgar Yojana SGRY. This program was launched in the year 2001 1st September, and the main objective to provide the employment opportunity of the surplus laborers, to focus on the development of the region which is economic and the socially backward, to focus on the development of the infrastructure, in which the funds was generated by the central and the state government, and the ratio is the 87.5% by the central government and the 12.25% funds was provided by the state government. Okay, Pradhan Mantri Gramodaya Yojana PGY, it was launched in 2008. The criteria of this to target the 5 important areas, that is the health, primary education, drinking water, housing, and the roads development in the rural area. Is it clear? So that is the main objective of this plan. The next is the Swarn Jayanti Sahri Rozgar Yojana SGSRY. Is it clear? It is launched in the year 97, 1st December. The objective of this plans is to provide the self-employment or the wage employment to the urban employment or the underemployment. Is it clear? And this program is related to the urban unemployed or the self-employed, and the third is provided by the center and the state government by the 75 and 25% ratio. Is it clear? Now, Prime Minister Rozgar Yojana PMRY, this schemes for the providing the employment to the educated peoples, where they give the loan of 1 lakh and the 2 lakh rupees to start their own business.
Minimum needs programs which give some basic facilities to each and every peoples, like the primary education, adult education, rural health, rural water supply, rural road, rural electrifications, housing, ecological improvement, and for the urban slums. Okay, that is the minimum need program. The National Food for Work programs, which is initiated or launched in the year 2004, which program was initiated is the 150 most backward district of the country. The program is open to all the rural people who are in need of the wages employees and desire to the manual unskilled laborers. It implies 100% centrally sponsored schemes, यानी कि इसका जो पूरा फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है. ये देख लें. So, but that is a lots of the drawbacks is of this perhaps that the poverty alleviation programs. There is a criticism is also there. The administration and the concerned staff was not inefficient and could not work efficiently. is it clear? यानी कि इस प्रोग्राम को जो भी इम्प्लीमेंट करें वो इस प्रोग्राम को सही से लॉन्च नहीं कर पाए, इनका मॉनिटर नहीं कर पाए. Those in charge of the programs favorite the educated, rich and the resourceful person. यानी कि इनका सपोर्ट वो लोग उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो पढ़े लिखे हैं या जिनकी पहुंच है. Remote areas and the poor household located in the interiors was neglected. यानी कि जो दूर दराज के गांव हैं या पुअर हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया है. Institutions that were needed to provide the facility like the credit marketing are very low. यानी कि लोन देने वाली या किसी भी तरह के और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे गांव में है ही नहीं. डेफिशिएंसी ऑफ द पुअर वॉज नॉट क्लियर. आज की डेट में भी अगर हम अपने देश में बात करें, APL और बुअर BPL इज जस्ट ए मिथ. ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जिसके बेस पे हम ये क्राइटेरिया देखें कि पर्टिकुलर पर्सन इज द पुअर, पर्टिकुलर पर्सन इज नॉन पुअर. देख लें. सो दैट्स वाई द बेनिफिट इज ऑल्सो गिवन टू द सम नॉन पुअर ऑल्सो. ओके, जिसकी वजह से जो पुअर नहीं है वो भी इन स्कीम्स का फायदा ले जाते हैं. पावर ग्रुप इन द विलेज was fully control this poverty alleviation program. Okay, that is the main important thing. The strategy of the PAPs was not linked with the overorder. यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ने प्लान किए they will be target some particular sector, particular area, but not for the overall development of the poor. Is it clear? So that is the some criticism of this poverty alleviation program. Now, if you have find any problem to understand any topic or any part of this chapter, you can call me or message me on my number which is in your screen. For till now, have a nice day. Thank you all of you.